News just coming in. There's been a blast in Lahore in Pakistan. 4 people are reportedly dead. A few details. This is a blast that's been heard near the police lines in Lahore. Police personnel and rescue teams are on their way to the blast site. According to latest information that's coming in, at least 5 people are now reported killed in a blast at Lahore. Reports say that huge plumes of smoke, as you can see on your television screen, they are visible in the sky, in the air. Lahore's densely populated area has been targeted. This is the Kila Gujjar Singh area of Lahore that's been targeted. This is the site of the explosion, which is not very far from the Pakistan Railways headquarters. It's close to the Pak Railways headquarters, where a blast has just been reported, and these are pictures that we are getting to you of that blast site. 5 people reportedly killed in this blast. You can see fire there, 5 dead, several injured. No terrorist organization has so far claimed responsibility of this blast. The nature of the blast is still also not clear. Rescue teams are on ground. Anti-terror squads have also reached the Kila Gujjar Singh area where this blast took place. मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है लोगों की बड़ी तादाद के जमा होने की वजह से। लिहाजा जियो न्यूज़ के तवज्जुह से हम अपने देखने वालों से अपील करेंगे कि शहरी जो कि इस वक्त दहशत में हैं, जो कि परेशान होकर जबकुआ का रुख कर रहे हैं, वो क्राइम सीन से दूर रहें ताकि इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात ना पेश आ सकें। और आपको ये मनाजिर भी दिखा रहे हैं जायवकुआ की इर्द गिर्द की ये इमारतें, जहां पर मुतादिद प्लाजे कायम हैं। धमाका इस कदर जोरदार था, इस कदर शदीद था कि इर्द गिर्द की इमारतों के शीशे चकनाचूर हो चुके हैं, टूट चुके हैं। और ये वो मनाजिर हैं जो कि सड़क के हैं, जहां पर एक गाड़ी में बताया जा रहा है, अब तक गैर मुसद्दका इत्तला है कि मुबैना तौर पर गाड़ी में नस्ब किया गया था धमाका खेज मवाद। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, रेस्क्यू की गाड़ियां जायवकुआ पर मौजूद। और And I want to quickly bring in headlines today is Hamza Amir from Pakistan for more on this. I also want to bring in Shivarur. Hamza, what more can you tell us about this? Is this a terror attack? Yes, Gaurav, this is confirmed that this is a terror attack because it is being said for now that there was a planted bomb blast in a vehicle parked outside the police lines, and it actually blew up. It's a huge explosion. 3 people are confirmed that dozens have been injured, and there are firing gunshots being heard right now from across the area, and that is why the security agencies are trying to find out where the terrorist might be. But that is for certain that this is a terror attack, and it is as a backdrop of the fact that today there were a few terrorists who were supposed to be hanged in the Kot Lakhpat jail who were on death row. And I think this is the reaction to that. And for now, the death toll confirmed is 3, and the injured is more than 16 to 17. Okay, stay with me for a moment, Hamza. Shiv, what more can you tell us? You've been looking at what media is reporting in Lahore. What more do we know of this terror attack? Gaurav, the death toll, according to the Express Tribune, the information we're getting from local media and local journalists we've been in touch with, suggests that 8 people have been confirmed dead in this blast, which took place, like Hamza said, at the police lines area in the Kila Gujjar Singh area of Lahore. And there are conflicting reports about whether this was a human bomb, a suicide bomber, or whether explosives were planted in that particular area. As Hamza said, it was outside a hotel in the pretty crowded police lines area. Now, it was a massive explosion heard in many places. There are security agencies on the site right now. Many people have been injured. There is also a high likelihood of the death toll actually going up. The Express Tribune local report suggests that 8 people have been killed, but that number is likely to go up. Virtually every single media report we're looking at right now, Gaurav, says that the injured have been shifted to the Mayo Hospital, which is a nearby hospital in that area. Fire tenders are also currently at the site. There's a large amount of damage as we await pictures. Shiv, let's just listen into the local police. टारगेट पुलिस लाइन थी ये नहीं अभी कुछ नहीं कह सकते।
अहमद फराज पुलिस हुक्काम के साथ मौजूद, जानने की कोशिश कर रहे थे इस धमाके के हवाले से हकायक। आपको बताते चलें, पुलिस हुक्काम अभी कुछ भी कहने से गुरेज कर रहे हैं। हलाकतों की तादाद कितनी है, कौन सा टारगेट था, किस तरह का धमाका किया गया, क्या नौयत थी इस धमाके की, पुलिस हुक्काम अभी इस हवाले से कुछ भी बताने से गुरेज बरत रहे हैं। आपको अफसोसनाक और ताजा तरीन सूरत हाल के हवाले से हम आगाह कर रहे हैं। लाहौर में जर्टन रोड पर वाक़ पुलिस लाइंस की इमारत, इसके चंद ही गज के फासले पे एक निजी होटल है, उसके बाहर गाड़ी में जोरदार धमाका हुआ। धमाका इस कदर जोरदार था कि इर्द गिर्द की मुतादिद इमारतों के शीशे टूट गए। 3 से 4 गाड़ियों में धमाके के बाद आग भड़क उठी। इस वक्त सूरत हाल जाए वक़ुआ पर यह है कि आग पर काबू पा लिया गया है, फायर ब्रिगेड का अमला, गाड़ियां मौजूद हैं और साथ ही साथ Hamza Amir also with me from Pakistan. Hamza, has any terror group claimed responsibility for this strike? No, Gaurav, for now, no terror group has claimed the responsibility. But it should not be forgotten that just recently in Karachi, there were a few grenade attacks outside schools. And there were pamphlets distributed by terror groups saying that if the Pakistan government does not stop executing their fellow men in Pakistan jail on death row, then they will have to suffer more severe and deadly attacks. And as I said before, in Lahore, there were 4 terrorists who were supposed to be hanged today and executed. They were on death row. They belonged to the banned outfits, the Tehreek-e-Taliban Pakistan and Lashkar-e-Jhangvi. And just recently, yesterday in Balochistan, the commander of Lashkar-e-Jhangvi was also killed in a bomb strike. So I think this is a reaction to that Pakistan's fight against terrorism and targeting militant commanders is certainly, getting a retaliatory action from them, and targeting the police lines highlights the fact that these are the people who actually are the security officials and they are on the hit list of the Taliban militants. And Hamza, this was a targeted strike aimed at the police lines, or did terrorists have some other location in mind? You were also saying that some gunshots were heard. So this is not just an ID blast, there could also be terrorists in the vicinity? Well, yes, in fact, even right now as we speak, there are gunfires being heard from across the vicinity on all sides of that police line building. And the targeted attack seems to be targeting the police lines because the car that was parked over there was a few yards away from the building. They could not actually go inside, but they parked the car outside. And I think whoever drove that car actually got dispersed, in a form of other people around the area. And that is why gunshots are being heard. They would be probably trying to enter into the police line building and target more police officials. But for now, the security forces are trying to find out where these gunshots are being heard from, and they're trying to tackle the situation as soon as possible. Stay with me, Hamza. Shiv, this is to an extent quite the standard operating procedure of terrorist groups. First a blast, as soon as the attention is diverted, a number of terrorists then try to enter either a hotel or a police or an army location. This is how terrorists usually operate in parts of Pakistan. Absolutely, Gaurav. As the investigators actually look at precisely what the other side of this attack is, they'll also be expecting some kind of responsibility to be claimed by terror group. As Hamza was rightly pointing out, the fact that this was right outside the police lines appears to suggest that there was a specific message. This was perhaps in response to a certain kind of action. Remember that the police lines area is a high security area, so obviously there's a message there as well. Now, the question you ask is very important because diversionary tactics, facilitating, a different kind of attack, drawing the Pakistan police and their agencies' attention to a particular attack, so a larger attack can be mounted. Infiltration of high security establishments in the area are all very real possibilities. But what's happening on the ground right now is that 8 people have been killed. Emergency response agencies are on a war footing at that point. Fire tenders, hospital ambulances trying to get there. We haven't got pictures just yet of the current situation, but we understand that it's a pretty chaotic situation outside the area, which to a 3-kilometer radius has been completely cordoned off. The area is being evacuated. The hotel outside which this blast actually took place is in the process of actually being evacuated, though there are some people still inside the hotel. And obviously the police will be looking for CCTV images of what may have been possible. At this stage, I'm looking at the latest reports, Gaurav. There's still no clarity yet about whether this was a human bomb or whether explosives were planted by someone who got out of there and then triggered the explosion. And the fact that the blast took place very close to the police lines and that gunfire can still be heard
Let's for a moment listen into this reporter of Geo News before I come back to Hamza. की हलाकत की तस्दीक कर दी है। जिन नाजरीन ने हमें अभी ज्वाइन किया उनके लिए बता दें कि पुलिस लाइंस किला गुजर सिंह के बाहर जो एक जोरदार धमाका हुआ था उसमें 8 अफराद हलाक हुए हैं और ये तस्दीक जो है ये रेस्क्यू टीमों ने कर दी है और मुतअद्दिद अफराद जख्मी हैं जिनको गंगाराम अस्पताल, मियो अस्पताल और सर्विसेज अस्पताल पहुंचा दिया गया है। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आग लगी थी उस पर काबू पा लिया गया है। यहाँ पर गाड़ियों 3-4 गाड़ियों में आग लगी हुई थी जिन पर आपसे कुछ देर पहले फायर ब्रिगेड ने यहाँ पर पहुंचकर आग पर काबू पाया और तमाम जख्मियों जो हलाक अफराद थे उनकी डेड बॉडीज को यहाँ से रिमूव किया है। पुलिस की खासी नफरी यहाँ पर पहुंच चुकी है। CCP लाहौर कैप्टन अमीन से हमारी बात हुई है। उनके ये कहना है कि ये एक प्लांटेड जो है ब्लास्ट था। इस बारे में तस्दीक की जा रही है कि ये इसकी नौयत क्या थी, ये कितने किलो बारूद इसमें इस्तेमाल किया गया। जब उनसे ये सवाल किया गया कि क्या इस धमाके का टारगेट पुलिस लाइन थी तो उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया और उन्होंने ये कहा कि इसके बारे में भी अभी तक जो है वो तफ्तीश की जा रही है, इंट्रोगेशन की जा रही है कि आया टारगेट क्या था। ये जिस जगह पर ये पुलिस लाइन और ये वाकया पेश आया ये बिल्कुल शहर का जो है ये बिल्कुल शहर का वस्त है, यानी कि ये बिल्कुल शहर का सेंटर कहलाता है और ये इसको रेड जोन भी कहा जाता है इस इलाके को, क्योंकि यहाँ पर अमेरिकन कौंसलेट है, यहाँ पर मीडिया के दफातर हैं, लाहौर प्रेस क्लब है और दीगर अहम इमारत यानी कि जिसमें पंजाब असेंबली भी है, वापडा हाउस भी है। और जिस जगह ये वाकया पेश है ये तकरीबन रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर का इलाका बनता है जहाँ पर ये वाकया पेश है। और अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि मेरे अकब में आप देख सकते हैं पुलिस अहलकारों की काफ़ी तादाद मौजूद है यहाँ पर फोरेंसिक के मानने के लिए। यहाँ पर उनका अमला भी यहाँ पर पहुँच चुका है और शवाहिद इकट्ठे कर रहा है, जबकि जख्मियों को बॉडीज़ को यहाँ से रिमूव कर दिया गया, अस्पतालों में पहुँचा दिया गया है। और यहाँ पर आने वाले तमाम रास्ते जो थे उनको आप देख सकते हैं कि शाम मैंने लगाकर बंद कर दिया गया है, खारदाने तारे लगाकर बंद कर दिया गया है और तमाम यहाँ पर जो दफातर थे उनको बंद कर दिया गया, उनको खाली करा के जो अमला था उनको दफ्तरों को खाली करा के उनको वहाँ से निकाल लिया गया और ख़ास तौर पर पुलिस लाइन के साथ जो इमारतें थी वहाँ पर स्नाइपर्स को तैनात कर दिया गया है जी। और पूरे लाहौर में अलर्ट जो है सिक्योरिटी उसको अलर्ट कर दिया गया है। लाहौर में सिक्योरिटी अलर्ट। So security is on high alert across Lahore. This is a terror strike in the red zone of Lahore. This is a VVIP area. A blast taking place very close to the police lines. Shiv Arur and Hamza Amir with me. We are on this top focus story here on Headlines Today. Stay with me for a moment. A quick break. We'll be back with much more. There's been a massive terror strike in Lahore in Pakistan. 8 people are feared dead in an ID explosion. These are the latest pictures that we are bringing to you from ground zero. 8 dead. This is the red zone of Lahore, the VVIP zone. The American consulate is here. The Lahore Railways headquarters is here. The district police lines are here where this blast took place. An ID blast perhaps in a car is what people are telling, eyewitnesses are telling the police. Headlines Today is Hamza Amir now joins me. Let's listen into this eyewitness first. मैंने अपना बच्चा लेना, मुझे जाने दे। सब सेफ है, कुछ भी नहीं, किसी जान को कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ जख्मी है बस। हेलो। जख्मी है। मेरा बच्चा स्कूल गया। आप ये जाए वक़ुआ से रिक़्क़त आमेज़ मनाज़िर देख रहे थे। अपने प्यारों को तलाश करती माएं बहनें यहाँ पर पहुंची हैं क्योंकि ये जो इलाका है एकदम धमाका हुआ, हमारी इधर से दौड़ लग गई हैं। जब हम आए हैं यहाँ बाबा ही पड़े हुए हैं, एक जवान बंदा पड़ा हुआ है, वहाँ सड़े पड़े, कोई समझ नहीं लग रही थी क्या करें, किसको उठाएं। उठा के उधर रखा, 1122 वाली कोई टीम नहीं आई। अब 1 बजे आ रही है, सब हाजिर हो रही हैं। ये कोई इंसानियत है? आधा घंटा हो गया मैते वैसे तरफ रहे हैं, आदमी तरफ रहे हैं, तरफ के मर रहे हैं। 2-4 ये काम हम अपने मोहल्ले में, ये साथ ही हमारा मोहल्ला है इलाका, वहाँ से हम खड़े हैं तो एकदम से इतनी शिद्दत का धमाका हुआ कि हमारी जमीन पाँव से ना वो लर्ज गई है। ठीक है ना, हम भागे इधर आए हैं तो इधर कुछ भी नहीं था। ठीक है ना, तो जख्मी से 2-3 को तो हमने एम्बुलेंस में डाल के तो भेजा। एक की तो मेरा ख्याल अल्लाह ना करे, वो अल्लाह सलामत रखे उसको, बहरहाल वो फारिग था, उसको हमने उठा के बाहर फेंका। ठीक है ना, एक हमारा ये टेलीफोन का मुलाजिम था, वो उसको शेल लगे हैं। ठीक है ना, उसको हमने इमरजेंसी पे भेजा और ये सारी अब आ रही है फायर ब्रिगेड वगैरह। ये मेरा ऑफिस जी इस प्लाजे के साथ वाले प्लाजे में है और मैं बाहर अपने गेट पे खड़ा था कि इतना जोरदार धमाका हुआ है। उसी वक्त मैंने इंसानों को हवा में उड़ते हुए देखा है और लाशें सड़क के ऊपर गिरी हैं। मैं समझता हूं कि उनका टारगेट जो है पुलिस लाइन थी और पुलिस की सिक्योरिटी वहां पे टाइट थी।
इसलिए वहां पे वो नहीं पहुंच सकते थे और उन्होंने नियरेस्ट पॉइंट जो है वो दीवार, चुके ही कंबाइन है, ये पुलिस लाइन ही बनती है, और उसके साथ वो लड़का जो है वहां पे ये ब्लास्ट किया है। और मेरा ख्याल है, जो मेरी जाती ओपिनियन है, चूंकि मैंने वहां नीचे से एडवाइस जो है पुलिस ने उठाई है, वो ये कोई प्लांटेड एडवाइस थी जिससे धमाका किया गया है। और अभी तक तो 6 डेड बॉडी जो है यहाँ से शिफ्ट हो चुकी हैं। बाकी अल्लाह ताला रहमत करे जी, बहुत सारे और भी जख्मी लोग। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूँ मीडिया की वजह से कि ये हमारी एजेंसी का बहुत अच्छा कंट्रोल था, लेकिन जो अदारे हैं, एम्बुलेंस 1122 रेस्क्यू डिपार्टमेंट, उनका बहुत बड़ा फेलियर है। चूंकि जो हम जख्मी उठा के वहां से लोगों ने सारे इतने बड़ी अपनी जान को रिस्क में डालते हुए, जब धमाके हो रहे थे, फायरिंग हो रही थी यहाँ पे, एक स्टेज पे तो हमें ऐसा लगा जैसे वहां पे दहशतगर्द अंदर जा चुके हैं। चूंकि धमाके के बाद फायरिंग भी हो रही थी बाकायदा, वो शायद कोई ब्लास्ट की फायरिंग थी, छोटे छोटे धमाके हो रहे थे, और हमें में फील ये हुआ कि अंदर धमाके हो रहे हैं। तो हम अपनी जान को खतरे में डाल के अपने लोगों के लिए, जख्मियों के लिए, तमाम लोग इर्द गिर्द के यहाँ पे अपनी जान को परवाह ना करते हुए यहाँ पे आए हैं। लेकिन कोई एम्बुलेंस, हमने हजारों टेलीफोन किए, पुलिस ने बहुत बर वक्त कंट्रोल किया है। पुलिस कुछ ऐनी शाहिदीन की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। ऐनी शाहिदीन का ये कहना था कि धमाका। Hamza Amir, my colleague, is on ground zero. Hamza, what more can you tell us about this blast? Has any group claimed responsibility for this? What are your police sources telling you? Well, Gaurav, for now, no group has claimed the responsibility. I've spoken to a few eyewitnesses over there and also spoken to the hospital authorities just now. The casualty number has gone up to 10 now, and that's only if I'm talking about the Mayo Hospital. That's the closest one. Other hospitals, there are 2 other hospitals there where the injured and the killed people have been taken to. So I think the casualty is a lot higher than this. It was a crowded place, and there were people around when the blast occurred, but that is confirmed that it was a planted blast in a vehicle. And as one of the persons who was there was telling that he saw bodies, flying in the air, and people crippling down and being burnt to death also, because there was fire around that area too. So I think this seems to be a planted attack, and it seems to be a very strategized attack targeting the place which is highly secured. Yes. Police line is followed by the U.S. consulate over there, is also followed by the press club and also the railway station. So that's a very crowded area that we're talking about, and it's having it done in the right in the broad daylight. I'm sure the number is going to be a lot higher on the casualties.